Okay, so we can start the session because already 7 minutes we have spent. Okay. तो आवाज आएगी तो आएगी. Okay, so guys, we are going to start the session, right? Because now it's 8 minutes we have spent. So what was about the yesterday session? How many of you have practiced on Python? कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया है जो कल कराया था आपको? किया भी है या नहीं किया है बताइए. ये सब मैंने किया था। कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम आई? तो सर बस कुछ कमांड चल नहीं रही थी। कौन कौन सी कमांड चल रही थी बताइए मुझे. अंजलि, आर यू देयर? यस सर। अंजलि, आपने प्रैक्टिस किया है पाइथन में जो कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए थे? यस सर किया था। तो कोई इश्यू आया? नो सर। व्हाट इज कैमल केस? क्या होता है कैमल केस? कैमल केस. अंशिका, व्हाट इज कैमल केस? यस सर। व्हाट इज कैमल केस? सर कैमल केस सर पास्कल केस तो आपने ये बताया था जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं और कैमल ठीक है. केस में और सर जो मतलब कि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था माई स्कूल नेम तो उसमें शायद फर्स्ट वाले लेटर लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है और सेकंड और जो आगे के रहते हैं वो कैपिटल। और पास्कल में सपोज कीजिए मेरा एक है माय नेम, तो पास्कल में कौन कौन सा लेटर सर इसका पास्कल में कैपिटल? दोनों मतलब माई नेम में तो माई एक तो एम होगा कैपिटल और एन होगा। ओके. एंड ओके. खुशी, खुशी, आर यू देयर? खुशी, आर यू देयर? ऋतिक, ऋतिक ढाका, ऋतिक, आर यू देयर? Yes, sir. ऋतिक, व्हाट इज स्नेक केस? व्हाट इज स्नेक केस? Sir, very sorry. आप लोगों ने ये बताइए स्टडी किया है इसमें जो मैंने कल पढ़ाया था या नहीं किया है ये बताइए. व्हाट्स द रीजन? Because this is very basic. When I will move to the next chapter, NumPy, Pandas, IPython, Matplotlib, then it will be very difficult to you. है ना? It will not helpful. It will give you a drastic situation that now which part you have to study. And dear, be careful. Project work you have to do on your behalf. Okay, that's the reason I'm demonstrating you. I'm teaching you Python in very detail. Otherwise, only three libraries we teach to the candidates: Python, NumPy, Pandas, and candidate have to work its own.
Okay, so that's my personal opinion that you should have the idea of basic Python also. But if you are not spending time, you are not making practice on that. So what is the meaning of that? I think this is totally wastage of time, both side, as well as you, as well as from our side also. Isha, are you there? Isha is there. Isha Kushwaha. Yes, sir. Isha, what is snake case? What is snake case? सर इन केस इसमें अंडरस्कोर आता है लेटर्स के बीच में, मींस वर्ड्स के बीच में। Is why we use underscore in between the letter, yeah, between the words? Why? सेपरेट करने के लिए। सेपरेट करने के लिए बेटा, वेरिएबल एक वेरिएबल्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, नेम को टोटल। अंडरस्कोर क्या करता है, एक ब्रिज की तरह से काम करता है। कल भी बताया था ना कि अंडरस्कोर से, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको सबको? नो सर। नो सर। चलिए जस्ट नाउ इट्स विजिबल। इट्स विजिबल नाउ। यस सर। यस सर। यस सर। Letter of your word will be in small. All other letter of the words in next words, first letter will be in capital. Understand? Snake case is the same, but in snake case always use the underscore to connect a variable or to collect a variable in a single unit. You can see my school name is a single variable, but we are using three words. Understand? It's clear to you all or not? Okay. What is concatenation? What is concatenation? Jyoti Sharma. Yes. Jyoti are there? Yeah, Jyoti, what is concatenation? Yes, sir. Sir, to merge the variables. To merge the variables. सर इसमें क्या होता है concatenation? Concatenation is the just to merge the two variables. क्या अच्छा, ये बताइए मुझे, कल के सेशन में आपको समझ आया था या नहीं आया था? Because what the answer I'm getting, I was not expecting that. Sir, it is used to join the two or more strings together. Yes, variables नहीं, strings को, variables तो वैल्यू होल्ड करते हैं। अंडरस्टैंड? जो वैल्यूज है उनको ही तो मर्ज करेगा। अब कॉन्कैटिनेशन अगर सेम डेटा टाइप है, ठीक है, if we have same types of data, then concatenation can be performed. But if we have different type of data, then concatenation may be performed or not. नो सर। Suppose we have two concatenation always will be performed on the similar kind of data type, right? What is global variable? What is global variable? Priya. Priya is there?
Priya Mittal. Yes, sir. Here, what is global variable? सर जो फंक्शन से बाहर डिफाइन होते हैं. वेरिएबल तो हर एक की डिफाइन होता है, चाहे लोकल की बात कीजिए, चाहे ग्लोबल की कीजिए, चाहे पब्लिक की कीजिए, चाहे प्राइवेट की कीजिए, चाहे प्रोटेक्ट की बात कीजिए. Sir, outside What of the a meaning of global variable? sir, that are created outside of a function. No, global variable can be declared, can be created inside a function. Shalu Gupta. Shalu Yes, sir. Gupta. Shalu, what are the global variables and how Python have the different kind of global variables instead of other language? सर ग्लोबल वेरिएबल वही होते हैं जो डिक्लेयर्ड होते हैं आउटसाइड ऑफ फंक्शन. Okay, can we declare the global variable inside a function? सर वो तो लोकल वेरिएबल में होते हैं. क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यस और नो? Shruti, are you there? Yes, sir. Shruti, what are the global variables and how global variables are special in Python instead of other language? ग्लोबल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल ग्लोबली और वो सर प्रोग्राम में हम कभी मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उनको यूज कर सकते हैं. Okay, and where we create them? सर हम उन्हें आउटसाइड और इनसाइड द प्रोग्राम दोनों में क्रिएट कर सकते हैं. Okay, inside, if we are declaring inside, then what will be the syntax? What is the process to declare inside a function? Vineet, Sir, are you by there? using global keyword. Yes, that's a simple thing. You people are confusing that what I am asking. I'm not asking too much. I'm just asking that I have demonstrated yesterday, and I am expecting that you should answer. But it's very, we can say that it's just time spending here, and but not getting any positive come out from that. Okay, so please tell me frankly, what is the problem? Why you are not able to understand these things? And you should have that ethics that you can placed on behalf of Python. बट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला इसका. टेल मी व्हाट आई हैव टू डू टुडे. आई नीड टू गो अहेड और नीड टू द सेशन. शिखर, शिखर इज देयर? Yes, शिखर, ये yes. क्या प्रॉब्लम लग रही है? क्या प्रॉब्लम लगी है कि एक भी आंसर नहीं दे पा रहा है? क्योंकि एग्जाम तो नहीं चल रहा है ना आपके कॉलेज में? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस शिखर. Hello. हेलो हेलो, यस यस प्लीज Yes, sir. बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? एक भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं. इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है क्या सब ने? सर ऐसा ही हो सकता है.
क्या सजेस्ट करोगे आप? सेशन रिपीट करूं या आगे बढ़ूं? सर इट्स योर कॉल, मैं क्या कह सकता हूँ। ऋतिक ऋतिक ढाका। Yes, sir. ऋतिक ढाका। Yes, sir. ऋतिक, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? सेशन में कुछ प्रॉब्लम थी या इसको टाइम नहीं मिला आपको स्टडी करने का, या आपको रिपीटेशन चाहिए सेशन का? सही। सर मैं लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया। Okay. Manika, Manika, Yes, yes, you sir. also Yes, there. sir. What is the problem that I'm not able to get any answer from your side in positive way? क्या मतलब कमी क्या रहेगी कल के सेशन में? कुछ कमी थी कल के सेशन में? No, sir. ऐसा या तो कुछ प्रैक्टिस नहीं की ना सर ने, तो सर आंसर क्यों नहीं दे पा रही? प्रैक्टिस की वजह से। एग्जाम वगैरह तो नहीं चल रहे ना आपके? No, sir, एग्जाम सर थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए, बिकॉज होगा क्या, जब आपका ये पाइथन में प्रोजेक्ट करेंगे तो यही चीज़ें वहाँ काम आएंगी। ओके सर। अंजलि, अंजलि, Yes, sir. अंजलि सहकल, Yes, sir. what you are thinking? What do you think, that session was not good or session Sir, had a sir, actually I lack was of कल demonstration? मैं कल मैं क्लास में लास्ट में आई थी सर, बिकॉज मेरा लेक्चर था डायरेक्टर सर का, तो आई हैव जॉइंड यस्टरडे एट 2:30 और 2:45 PM, तो सर मैं मिस हो गया बहुत सारा। जो आपने लास्ट में पढ़ाया Okay. वो तो आता है, स्टार्टिंग का नहीं पता। Yes. Okay. Sahad Hassan. Yes, sir. That what you expecting? क्या होना चाहिए? जो कि देखिए आंसर्स तो कोई दिया नहीं है किसी ने। आपका भी सेशन मिस हो गया था क्या कल? नहीं सर, मेरा मिस नहीं हुआ सर। तो आपको चलिए आज का मैं टाइम दे देता हूँ, मेक प्रैक्टिस। आज मैं सेशन आगे बढ़ाता हूँ। मंडे सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली, इसकी मैं शेयर करूँगा आपको मैनुअल, उस पर प्रैक्टिस करके देखेंगे सब, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ ठीक है। इसका मेन जो हमारा पर्पस था इस क्वेश्चनिंग का या क्वेश्चनरीज का, कि आप कितना गेन कर पाएंगे, ठीक है? डिमोरलाइज नहीं होना है, जस्ट थिंक अबाउट दैट वेयर इज द प्रॉब्लम। ओके नाउ, ओके सो टुडे, yesterday I have demonstrate you about the Python. What is Python? Screen is visible to you? यस सर। Okay, ठीक है। तो कल मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल तक करा दिया था। कॉन्कैटिनेशन में दो वेरिएबल ऐड नहीं होते, उनकी वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। कोई भी वेरिएबल जिसकी सेम डेटा टाइप है वही हमारा कॉन्कैटिनेट हो सकता है, राइट? ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन भी डिक्लेयर हो सकता है, आउटसाइड द फंक्शन भी हो सकता है। पाइथन का ये फीचर है। इनसाइड अगर डिक्लेयर करेंगे तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे, और आउटसाइड जब उसको यूज करेंगे तो आप उसको नॉर्मल वे में डिक्लेयर कर सकते हैं, नो नीड टू यूज ग्लोबल की। ओके नेक्स्ट, data types. Data types, yesterday I have explained to you numerical data type, or integer data type, float data type, string data type. So yesterday I have covered this section. Now proceeding to next section. Next is the random number. क्या होता है random number? Any idea about the random number? Sir, it gives the random value in a particular range.
यस, ये क्या करेगा, कोई भी आपने क्या किया, एक रेंज डिफाइन की, उस रेंज में ये आपको एक नंबर जनरेट करके दे देगा। वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर आपने 10 से 20 के बीच की रेंज दी है तो आपको 10 ही दे या 11 ही दे। कोई भी रैंडम नंबर ये पिक करेगा अपने से और आपको वो दे देगा, ठीक है। अभी कैसे करता है काम, देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे रैंडम फंक्शन का। रैंडम फंक्शन क्या होता है, देखिए इसका जो सिंटैक्स है, रैंड रेंज, और ये आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी होती है रैंडम, रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट सर करना है। एक क्वेरी है। जी, यस, आवाज सर नहीं आ ये रही क्या? फंक्शन है मॉड्यूल रैंडम रैंडम, जो इसको हम मॉड्यूल, देखिए ये एक अलग मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, बट राइट नाउ हम केवल यहाँ रैंडम फंक्शन यूज कर रहे हैं, नहीं कि पूरी लाइब्रेरी के फीचर, ठीक है। रैंडम एक लाइब्रेरी है, आप देखिए यहाँ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो ये रैंडम एक लाइब्रेरी होगी, बट इस लाइब्रेरी का केवल मैं रैंडम फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम, रैंडम लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट की, वो रैंडम फंक्शन को कॉल किया डॉट रैंड रेंज, स्टार्ट रेंज और एंड रेंज। सपोज कीजिए मैंने स्टार्ट रेंज दे दी यहाँ पे कोई भी 20 और एंड रेंज दे दी मैंने 30। नाउ व्हेन यू विल रन दिस cell, after selecting you will see random number is 21, okay. When you run this cell again, now random number is 23. When you run again, 26. So at every attempt, at every execution time, number will be changed. Understand what the meaning of random number? Basically, random number or this feature is important when we clean the data set, when we make the data analysis, and sometimes what happen, कुछ फील्ड्स हमारे खाली हैं, दैट मीन्स उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, तो हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करके उसमें वैल्यू इनपुट कर देते हैं ताकि वो फील्ड हमारी एम्प्टी काउंट ना की जाए डेटा एनालिसिस के टाइम, ओके। क्लियर टू यू ऑल व्हाट इज रैंडम नंबर? किसी को कुछ पूछना है रैंडम नंबर के बारे में? ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रिंग? व्हाट इज स्ट्रिंग भैया? क्या बोलिए, बोलो बोलो, ऋतिक बोलिए, Group आप of आंसर दीजिए। characters. Yes, we can say that group of characters. Now we are using here line words multi-line string. Multi-line string means basically Python has the features to assign a line of codes or line of statements to a single variable. Right? In other language we cannot assign that, but in Python we can do that. You can see rules is a variable here, and this is the text that I have assigned, right? Multi-line string. You can add more if you want. You can add it like that. We are taking it. Okay. So now you can see my single variable have 4 lines. Okay. And yesterday I have also demonstrated that how you will store the data in string. In string you can cover your string by using single quote as well as double quote. When you are using multi-line string, then you have to use 3 times single quote or 3 times double quote, right? That is the main basically identification for storing multi-line in a single variable. You can see I have taken a single
force. Like that, when you run this variable, you will see this is the output. I am working on Python. Python is parsing language. It is very easy. We are taking it. So in Python, it has a very big advantage that multi-line string can be or many lines of words or characters we can store in a single variable. Understand? It's clear to you all? Any query? कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए नेक्स्ट है पाइथन स्लाइसिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का क्या मीनिंग होता है? Breaking into small parts. Yes. Basically, string can be, we can say that split or can be divided by using can be divided by using the slicing method. ठीक है? In slicing method, what will happen? We need to use the basic range here. Okay, suppose I have a string that is b equal to hello world. So you will see there in this string I have collections of character. Okay, so this string will be treated as a array and index will be started by default from 0. Okay, so when you will print this string and range you have taken here 2 to 5, then it will started from initial character and will count 5 character and print the result like that. You will see double L O. So here he is printing from 2 to 5. That means 2 to 5, 1 to 2 5, 0 1 2 3 4 5. Okay, because index is starting from 0. So here slicing is performing from starting from L and ending to O. So this is the basically range. Here we have split our split our string. So, so it's clear to you all what is the meaning of slicing? Slicing a string. Yes, sir. Any question? You can do any range. Suppose you have taken range here 1 to 4. Then you will see output will be changed like that. Now E double L, because you have to start from 1 and you have to select range till 4. So indexing of H is 0, E1, double L, 1, 2 and 3. So this is the basic fact that we use to make the slicing of any strings. If you are not giving a starting range, then what will happen? Suppose I did not given any specific range in the initial and just write down the second range. Then what will happen? In that case, it will started from the initial index of the string. Like that, here is hello. So hello H is 0 index, E 1 index, double L 2, 3, 4. So there are 4 index in that. So when we use print B and index starting range is 0, that means we did not assign, and last index we have assigned here 4. So you will see the output. What will be the output? H E double L. No, only hell. H E double L. Hell. O will be skipped. Yes, yes. पहले 5 था तो then it will hell. Okay. If you are taking here 2, so you will see here that it will started from the initial index. That means from 0.
and will print till last of index of the character. Like that, you can see I have taken here 2 and an index I have opened blank. Then output is here double L O W O R L D. That means because all the strings has been stored in a single variable, so he will skip first 2 character, and after that he will start and print all the words that comes into that string. Clear to all? How we will print from the how we will slide the string from the end? Any question about that? Slicing the string. Now, what is negative indexing? Okay, negative indexing is useful and can be used when we start or when we want to print from the end, right? So -5. What is the meaning of -5? It's reverse. It will count in reverse. So -5 to minus will take -5 O R L -2 -1 -2, right? So minus now Python modification. That means some case in a case where we have to change the case of data or value that we have stored. So Python has the some specific features to modify the strings. First case is the uppercase. What is the meaning of uppercase? Uppercase, that means to replace the character from lowercase to uppercase. That means into the capital letter. Suppose I have a this this value in the variables, okay, and I am changing this string to uppercase. So you will see this whole string uh, has been changed to capital letter. It's like a hello world. Same lowercase, all character will be changed to in small letters like that. You will see hello world. So these are features basically required when we are working in data analysis, and we have a set of code, but we want to make the uniformity. So lowercase we can use to make the uniformity into the particular data set. Okay. Now Python escape character. Escapes characters. What is the meaning of escapes character? What happens sometimes we want to make or we want to print a text in this in this pattern so that it will give a unique representation. Okay, so it's a all right. So if you have assigned using the single escape character, then that string will be covered in a single quote and it will be printed like that. You can see it's all right because here S has to be merged with the it. So backslash we have to use with the space in the terms of special character. So it's used to formatting the data by using special character. Understand? It's clear to you all? सबको समझ आया नहीं समझ आया? Yes, sir. बाकी और किसी का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इमीडिएटली, ओके. बट जब आप
आंसर नहीं देते हैं, नहीं पूछते हैं, तो इट्स लुक लाइक दैट यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। सो आप एटलीस्ट रेस्पॉन्स जरूर दीजिए। सेकंड है आपका बैकस्लैश का। बैकस्लैश भी बेसिकली फॉर्मेटिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। लाइक दैट आप देखिए, आप इसमें कोई कुछ भी आप इस तरह का प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो आप डबल बैकस्लैश से उस लाइन को आप एज ए कमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने डबल बैकस्लैश यूज किया तो आप देखिए सिंगल बैकस्लैश इसमें ये फॉर्मेटिंग के लिए प्रोवाइड करेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके पाइथन बुलियंस एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होती है? बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशन वे एक्सप्रेशंस होती हैं जिससे आपका रिजल्ट आपका ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, काफी सारी एक्सप्रेशंस हमारे जैसे ग्रेटर है, लेस देन है, गेट इक्वल टू है, ये सब हम बुलियन एक्सप्रेशन में काउंट करते हैं। पाइथन बुलियन एक्सप्रेशन को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे 10 इज ग्रेटर 9, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या रिजल्ट होगा? यस आएगा, नो आएगा, या 10 आएगा, True. नो 9 आएगा? Sir, true. ट्रू, लाइक दैट। ओके, 10 is equal to 9, it will be false. Why? Because 10 is not equal to 9 is less than 10. Yes, it will be false. Sorry, 10 is less than 9. It's also false, right? So Python have the all rich kinds of supporting structure that I have in other programming. So that's the reason I'm not taking too much time on that. Just giving you a little brief about that. Now Python operator. Basically Python supports different kinds of operator like arithmetic operator, assignment operator, Boolean operator, right? Comparison operator and logical operators. So firstly, what is arithmetic operator? क्या होते हैं arithmetic operator? What are the arithmetic operators? Which perform arithmetic operations. Yes, basically used to perform the arithmetical operation like that addition, subtraction, multiplication, division, modulus, percentage. All these types of calculations have been performed by using the arithmetical operation. Like in that function, in that example, you can see here I am using arithmetic operator, that means plus operator. It will result, it will give result 8. If I am using here star, then it will be used for multiplication like that. It will be 15. If I am using here division, then what it will do? It will divide the results. Okay. If I am using here percentage, then it will be used to find out the modulus like that. You can see modulus is 2. Okay. So these are the basically some arithmetic operations that we can use in Python. Next one is the assignment operator. What is the assignment operator? क्या होते हैं Sir, assignment operator? used to assign a value to a variable. Yes. Basically, assignment operator can be used to in two types. First one is by using single assignment operator. You can see here I am using here x equal to 5. So only value has been assigned here. But when I am using here operator, you can see the meaning of that particular x plus equal to is. That means I am using plus operator and the value of x has to be added with 3. So what will be the value of this expression? Value of this expression will be 8. 8 Why? bit. Yeah, because x plus equal to 3 means x equal to x plus 3, and here a value of x equal to 5. So 5 plus 3 it will be 8. So these are the assignment operator. I can use it by using the minus also. Then what will be the value of this statement? Why? Because x equal to x minus 3. Then value of x equal to 5, and I have to subtract 3. Okay, means what the meaning of that statement? It's so that x equal to x minus 3, right? Now what the value of x equal to x is 5. So when we put here 5, then 5 minus 3 equal to 2.
So result of x will be 2. So we can use assignment operator by in a combinations of any arithmetic operator. Okay. Mostly in programming, during calculation we use this pattern, which is very impactful. Now comparison operator. What are comparison operator? Sir, it compare the values. Yes, basically comparison operators are useful where we basically compare the two or more values, right? Comparison operator is useful when suppose we have two or more value and we want to check, then we use comparison operator like that. Double equal, what it will do, it will check the value of these two operator, whether these two operator have the base whether these two value has been equal or not. When you will select, then you will see it will return false, right? Second comparison operator is x greater y. This also can be comes in comparison operator. Here we are using it for comparison. Again, it's true. Suppose I am using here greater equal to, then you will see it will return again true. But if I am using it's less than or y, then it will return fine, right? We can also use not equal to operator, like that is not equal to. If x is not equal to y, okay, then what it will print? True. Yes, x is not equal to y. So here you can see I have made many comparison by using different operators. Okay. Next one is the logical operator. What are the logical operator? Have you heard about that? सुना है क्या होता है logical operator? Yes, sir. क्या Yes, sir. होते हैं logical? क्यों Sir, यूज करते हैं उनको? logical operations based on a given condition. No, I'm asking logical operator, not operation. Sir, देखिए and or लॉजिक, यस, हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो बेसिकली जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होती है एक्सप्रेशन फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में, देन वी यूज द लॉजिकल ऑपरेटर. जैसे यू कैन सी हेयर आई हैव टू एक्सप्रेशन, x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 and x is less than, so x is less than 10. So here you can see that x is compared for two value, whether x is greater 3 or x is less than 10. And here which operator is working here? And operator is using here for the combining the two conditional statement, right? So you can see when you will execute this statement, then it will be true. That means x greater 3, yes, true, and x less than 10, yes, it's true. So both conditions are true, so resultant will be true. That means in case of logical operators, if both conditions or both result is true, then final result will be true. Suppose I am taking here x is greater 3 and x is 11, greater 10. So what will be the result? What will be the result of that expression? Sir, False. Sir, false. 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 Why? क्यों? sir, Because X is less. Because यस, एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा, एक का रिजल्ट फॉल्स आएगा, है ना? अब ये ट्रू फॉल्स एंड कंडीशन में क्या होता है? वो फॉल्स होता है. यू कैन सी लाइक दैट इट्स फॉल्स. ओके. yes, sir. Suppose yes, I'm sir. using here, suppose I'm using here or, then what will be the result? True. True. Why? Because in or True, it is false. not necessary that both conditions, yes, it is not necessary that both conditions should be true. Because
इसमें नेसेसरी नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, वो ट्रू ही आएगा। ओके, समझ आया या समझ नहीं आया? आ गया। Yes, sir. तो ये आपके जो ऑपरेटर्स हैं सारे, इन ऑपरेटर्स में आपको एक एक आपने डिफरेंस देखा होगा कि जैसे अदर लैंग्वेज में हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स को, यूज करने के लिए काफ़ी सिंटैक्स फॉर्मेट्स, और हमें डेटा को प्रिंट करने के लिए पर प्लॉट है तो परसेंटेज डी, जैसे हम सपोज कीजिए डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर हमें उसकी वेरिएबल की इंटीजर टाइप है या डबल डिक्लेयर करना होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरह का कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, या है कहीं? आप कहीं भी डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे? No, sir. नो सर। नहीं कर रहे हैं ना? So these are the basically features of Python that you not need to declare any data type at the time of variable declaration. That means Python manage automatically at very time of executions of program. Okay, so why Python is said that Python is a parsing language. That's the reason, because all the features that has been used in earlier language has been implemented in this language and embedded with the libraries. You just need to import them and then use the functionality of that functions or library to directly. Okay. So now till today, I have complete all the operators as well as uh, operators, data types, variables, random numbers, and how the variable will be defined. So I'm hoping basic of Python is just about to complete. Now, next concept is Python list. Python list. What is list? क्या होती है list? List. डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है आप लोगों ने? So when number of elements stored in a sequence manner for list. Yes. बेसिकली लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारा जो पाइथन है, पाइथन में क्या है, पाइथन बेसिकली किसके लिए यूज होती है? डेटा एनालिसिस के लिए होती है। अदर लैंग्वेज में जो हमारी कंपैटिबिलिटी थी वो ये थी कि अदर लैंग्वेज केवल रियल डेटा को प्रोसेस कर सकते, राइट? बट अब अगर हमें डेटा एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो हमारे पास डेटा सेट होगा ना, वो डेटा सेट को हम कैसे प्रोसेस करेंगे? तो उसके लिए हमें जो ये हमारा पाइथन है, पाइथन ने हमें एक नया फीचर प्रोवाइड किया, दैट इज लिस्ट। लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल एलिमेंट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट? या मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आइटम इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, और इसमें जो आइटम होंगे लिस्ट में वो डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं, राइट? इसका मीनिंग क्या है कि लिस्ट में जो डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप्स है वो स्टोर हो सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि इसमें सेम टाइप का ही डेटा हम स्टोर करेंगे, राइट? जैसे मैंने कोई लिस्ट बनाई, सपोज कीजिए मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? तो उस लिस्ट में आप इंटीजर टाइप का डेटा भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग का भी रख सकते हैं, और फ्लोट भी रख सकते हैं। दैट मीन्स देयर इज नो लिमिटेशन दैट लाइक इन एरे। आप एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे का क्या फीचर होता है? व्हाट इज एरे? कोई बता सकता है व्हाट इज एरे? क्या होता है एरे? सर सर एरे में किस टाइप टर्मिनोलॉजी यूज करता है? सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है सर वो। और सर उसमें
जो सिंटैक्स है वो लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस का है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं और एरे में इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन भी हो जाता दैट मीन्स जो लिस्ट है, लिस्ट का यही एडवांटेज है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सकता है, जबकि एरे सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर करता है, राइट। एरे सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा स्टोर करता है, while लिस्ट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप इसमें स्टोर कर सकता है, ठीक। लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्स में होते हैं, चेंज कर सकते हैं इसके आइटम्स को, या कोई भी आइटम आपने स्टोर किया, और डुप्लीकेट वैल्यू भी इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स इनपुट कर सकते हैं। देयर नो रेस्ट्रिक्शन कि हम इनपुट इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं कर सकते। जो लिस्ट की जो इंडेक्स होगी, स्टार्ट इंडेक्स वो 0 से होगी, ठीक है, और सेकंड आइटम जो होगा इंडेक्स का वो 1 पे होगा। दैट मीन्स every time when we are talking about the list, that means index always will be started from 0. Okay, तो समझ आया क्या होती है लिस्ट? बाकी आप थोड़ा इसको पढ़ना, अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है 2:59। तो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप मंडे हम मिलेंगे तो शायद मंडे थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आएंगे, थोड़ा चीज़ों को रेडी करके लेके आएंगे, सो दैट कि हमें लगे कि हाँ इसका पाइथन में कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मंडे मैं आप सबसे जो मैंने अब तक यहाँ तक जो क्लियर किया है, मंडे आपका लिस्ट स्टार्ट करूँगा, बट उससे पहले जो आपको ऑपरेटर्स तक मैंने कराया है, एक्सपेक्ट करूँगा कि सभी यहाँ तक प्रैक्टिस करके किसी कोई प्रॉब्लम्स है तो नोट डाउन करके रखें और उसको प्रॉब्लम्स को आप मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। ओके सर। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप ओके पूछ सर। सकते हैं, बट एक्सपेक्टिंग यू प्लीज डू लिटिल वर्क ऑन दैट। ओके, चलिए, थैंक यू for joining the session. We'll meet you on Monday on same time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank